last chapter, that is physical and chemical change. What was the homework? To do the question answers, back question answers. Back question answers. You can send it in WhatsApp group. Okay, sir. Okay. Okay. Let's start. Elements. Compounds and mixtures. Look at here. What is element? Element. First, element is element are the pure substances. Okay, and element in periodic table, the alphabets written. That is basically element. Okay. In this chapter, we have to know that about element, compound, and mixture. Into this, which one is pure, which one is impure. Sir, Okay, element and compounds are pure. elements and compounds are pure. Okay, so first we have to know what we mean by pure substances. Okay. So at first, pure substances. Look, pure substances means there is a definite chemical composition. Now, definite chemical composition means suppose 40% A, 60% B. From where you can take that element or that compound. If in if in that percentage of A and B remains same, that's when it is known as pure substance. Okay, that is their chemical composition is same. If the elements percentage same, that means its composition is same. And remember, if composition same, that means their physical and chemical properties will be same or different. They're same. Same, because same amount of A present, same amount of B present. So their physical and chemical properties will be same. Okay. So definition is pure substances it has definite chemical composition, and due to that it having same physical and chemical properties.
Okay, definite chemical composition and having the same physical and chemical properties, those substances are known as pure substances. Okay, now remember, pure substances have always homogeneous. Okay, they are homogeneous in nature. Now, homogeneous. What is the meaning of homogeneous? Homogeneous means same or single. Okay, same or single state. Same or single state. Suppose we are taking example. This is iron rod. This is iron rod. So every portion of this iron rod is made up of iron atom or iron element. Okay, this is called homogeneous in nature because if you will take this portion or anyone will take this portion, in every portion we will get only iron atoms. Okay, there is nothing else, no one other elements or nothing else. That's why it is called homogeneous because no differences between chemical composition at any position. This is homogeneous. Every position is occupied by only iron, iron, and iron. Similarly, if we will take one beaker of water, so every position of water is occupied by H2O. We know the molecular formula of water is H2O. So each and every portion is there is an water H2O, 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 H2O. This is the homogeneous state. That means single state or one kind of state is known as homogeneous. Okay. So pure substances, elements, and compounds are the pure substances. But mixture is not pure substance. Element and compounds, elements and compound is pure one. Okay. Clear? Having any doubt? क्लियर है सबका? कोई डाउट है इसमें? No, sir. Okay. Next, which one is not pure? That is impure. So impure means having the definite chemical composition or different chemical composition. Different chemical composition. That means impure substances having it has uh, it has chemical composition in any proportion. Any proportion, that is impure substances and
it having different physical and chemical properties. They are heterogeneous, totally reverse. Okay, Sir, they are homogeneous also. impure substances, they are homogeneous. Sometimes it can be homogeneous. Okay, some kind of mixture as are impure, but they are homogeneous. We will discuss with example. Like impure substances, which one? Mixture. Okay. Elements and compounds are pure one and mixture is impure. Now two type of mixtures we will get, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Uh, Okay, that will be discussed in mixture portion. At present concept clear that pure substance is definite having definite chemical composition, definite physical chemical properties, and impure substances not proper chemical composition. It can be any proportion, and due to that they have different physical and chemical properties. Okay, done. Note down हुआ. No, sir. Sir, last line. Okay. Sir, done. Sir, done. Hmm. Sir, done. Okay. Next, elements. Out of pure substances are two types. That is elements and compounds. So now we will start elements. Elements is the simpler form of, okay, element is the simpler form. So it cannot be converted into anything simpler than itself. Like periodic टेबल पे जो 118 एलिमेंट्स का सिंबल दिया हुआ है, that is 100 एलिमेंट्स जो सिंबल दिया हुआ है वो सब होते हैं एलिमेंट्स. ठीक है, it is the simplest pure substance. Okay, it cannot be converted into simpler form of itself by
physical or chemical means। मतलब क्या है, ये तो एग्जांपल ले लें। सपोज वी हैव एग्जांपल हाइड्रोजन, सपोज वी हैव एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, sodium, all are elements and all are pure and this is the simple। अब हाइड्रोजन को तोड़ के हाइड्रोजन सॉल्ट स्मॉल क्या बना सकते हैं? कुछ नहीं, हाइड्रोजन इज द सिंपल फॉर्म। कार्बन इटसेल्फ कार्बन, अब इससे छोटा क्या बना सकते हैं? कुछ नहीं, ठीक है। तो ये होता है मेरा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। अब हम लोग बोल क्या सकते हैं कि ये एलिमेंट्स को हम लोग अगर डिवाइड करें तो इसमें इसके अंदर एटम्स बहुत सारे प्रेजेंट है और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ एक एलिमेंट का उसको क्या बोलते थे? एटम, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम। जैसे तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उसके अंदर में हर एक पार्ट हाइड्रोजन ही है, मतलब हाइड्रोजन का ही एटम है, ठीक है। कार्बन उसके अंदर हर कुछ जो भी है सारे एटम्स वो कार्बन का ही है। एलिमेंट्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। हाउ मेनी टोटल एटम्स आर देयर? Sir, 4. In nature there is total 118 एलिमेंट्स। हम लोगों के पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ओके। Yes. Out of which 92 are occurring Natural. naturally and 26 artificially, Yes. ठीक है। 92 naturally occurring and 26 artificially। नोट डाउन होगा तो बोलना। Sir, finish. अदर्स? The second last line. They're done. ओके।
Next, characteristics of characteristics of elements. Look at characteristics of element. The first, it will be discussed throughout the point. The first point is, as I told earlier, each element composed of same kind of atom, like iron. Iron having the only iron atoms, hydrogen having only hydrogen atoms. Okay. The first point is each element having only one kind of atom. One kind of atom. It is clear. Hydrogen having only hydrogen. रिजू फोन करे था वहां से कर लेते. Each element having only one kind of atom, that is hydrogen atom. Hydrogen element having only hydrogen atom. Carbon having only carbon atom. Okay. Now, so second point is, if hydrogen having only hydrogen atom and iron having, Sir, I cannot get your sound. huh? देखो, वो नाम बोलो. क्या बोले? सर, थोड़ा पहले आपका आवाज हाँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था. Just a second. Sir, elements cannot be broken into simpler substances. Yes. नहीं, देखो. Each element having only one kind of atom, that means hydrogen having only hydrogen atom and carbon having only carbon atom. सर Hydrogen कैमरा रोटेट हो गया. हाँ सर ठीक है. and so देखो, अगर हर एक एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट एटम है, तो हर एक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होगा. जैसे हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन. Okay, so we can say that similar atoms having the similar atoms having the similar chemical properties and different atoms having the different chemical properties. Okay, so similar atoms of each element having same properties, both physical or chemical.
but atoms of different elements atoms of different elements having different properties. Okay, clear this point? Atoms of hydrogen. All the atoms of hydrogen having the same properties of hydrogen, but it is not similar to the atoms of hydrogen. But all hydrogen atoms having the same properties with itself. Clear? That means one kind of elements से जितने atoms है उसके properties से property दूसरे element के property के साथ same नहीं होता. Got it? Yes, sir. Next point. Element element is a part of element is a part of molecules or compound both. Okay, when same kind of element joins together, then it is form molecules. When different kind of elements join together, then it form compounds. Clear? Fourth, elements are pure and homogeneous. Elements having fixed melting and boiling point. They will molten down and boiled at a fixed temperature because elements are pure. As because it is pure, as because it is pure, it having the fixed melting and boiling point. Okay, elements can take part in a chemical reaction. In a chemical reaction. इतने पॉइंट्स याद रख लो बहुत है. कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो बताओ. Sir, done. अच्छा अदर्स सब तो हुआ. Sir, done. Okay. Next, after the characteristics, we will see classification. Okay. Classification
of elements. As we have total 118 elements in our periodic table or in our nature, okay, we have divided that those elements in 4 categories. Okay, that is metal, non-metal, metalloid, and noble gas और inert element इसको बोलते हैं. ठीक है, noble gas और inert element. noble gas लिख देते हैं और inert elements. So at first metal. ठीक है, so metals, look, metals generally हार्ड होते हैं या सॉफ्ट मेटल्स? जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं या सॉफ्ट? Hard. जनरली दे हार्ड. एक्सेप्शन? Sodium and potassium. Okay. So this is sodium, this is potassium. Okay. सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब हुआ मेरा सॉफ्ट और सॉफ्ट मेटल. ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शन, लिक्विड मेटल कौन होते हैं? लिक्विड स्टेज Mercury. Mercury. मरकरी, that is Hg. Okay, mercury is liquid. Similarly, non-metals generally सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, बट हार्ड मेटल कौन होगा? हार्ड नॉन मेटल कौन होगा? हार्ड होने वाला Diamond. डायमंड. Now diamond is made up of Carbon. carbon. Okay, so you will write carbon. और भी हार्ड होते हैं सॉलिड कौन से नॉन मेटल? दैट इज आयोडीन. Iodine. आयोडीन इज हार्ड होता है. लिक्विड कौन होता है? लिक्विड होता है ब्रोमीन, दैट इज Br. ओके, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं. मेटल का एग्जांपल एक्सेप्शन करना है, सोडियम, पोटेशियम. एक्सेप्शन करना है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर सॉफ्ट मेटल एंड लिक्विड मेटल्स आर मर्करी. और हार्ड नॉन मेटल हुआ डायमंड, आयोडीन. लिक्विड नॉन मेटल ठीक है. जनरली सॉफ्ट हुआ और उसके बाद ये लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन और सॉलिड नॉन मेटल हुआ मेरा आयोडीन. मेटलॉइड हम लोग बाद में आएंगे.
ठीक है। मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस में ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का क्या मतलब होता है? Can be beaten into thin sheets. कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय बीटन। हम लोग इसको बीट करेंगे, हथौड़ा से पीटते चलो, बाय हैमरिंग करेंगे, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या होता है? All metals near about malleable, but we have to remember most malleable metal is most malleable. Which one? Gold. AU is the symbol. Okay, gold is the most malleable. That means gold can be converted into thin sheets, very much thin sheets. Okay, ये हेयर से भी थिन हो सकता है, हेयर जितना थिन होता है उससे भी थिन हो सकता है गोल्ड। They generally non-malleable. Metals having ductility, ductile property. So ductility means converted into thin wire. Okay. Malleability means converted into thin sheet, and ductility means converted into thin wire. इसका भी example most ductile gold. Gold is most malleable and most ductile too. This is generally non-ductile. It has luster property. Luster means shiny property. Okay, metal surfaces shine करता है, that is lustrous. They are non-lustered generally. Generally non-lustered, but exception है, shine करता है non metal Diamond कौन सा? and graphite. Diamond and graphite. Diamond graphite दोनों तो ब्रैकेट में लिखेंगे सी। ठीक है। नेक्स्ट, सोनोरिटी और सोनोरस। तो सोनोरिटी मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, जब मेटल से हीट किया जाता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। जो हम लोग के बेल होते हैं स्कूल वगैरह में, जो पहले के दिनों में बेल होता था वो मेटल का बना हुआ होता है। साइकिल में जो बेल होते हैं, ठीक है, तो मेटल से मेटल जब हीट होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उस टाइम पे साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज सोनोरिटी। Metals can conduct heat and electricity. Can conduct heat and electricity.
Okay. Which non-metal can conduct heat and electricity? Sir, graphite. Graphite. Graphite, heat and electricity both conduct graphite. Okay. Diamond can conduct only heat but not electricity. Diamond only heat, not electricity. But graphite can conduct heat and electricity both. These are the points you have to remember about metals and non-metals. Sir, Sir, Yes. there is exception of lustrous also. Lustrous, yes, definitely. sir, Sir, हाँ, graphite and iodine. ग्राफाइट लिखे हैं. Graphite generally non-luster, but exception diamond graphite is for luster. Iodine Iodine, also. iodine And also, iodine भी साइन सकता है. हाँ बोलो. sir, सर conduct heat and एक जगह मैं पढ़ा था सर एक जगह मैं electricity. पढ़ा था वहाँ पे लिखा था कि डायमंड को ज्यादा हीट करने से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. That will be extreme heat because diamond बहुत हार्ड सरफेसेस होते हैं. ठीक है, मतलब हार्डेस्ट नॉन मेटल में वो आता है डायमंड. तो सॉलिड स्टेट से वेपर डायरेक्ट वो मेरा कौन सा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन. बट हम लोग उसको सब्लिमेशन में नहीं मानते क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में वो नहीं जाता है. दैट विल बी, अब एक्सट्रीम हीट करने पर तो सब कुछ ही मेल्ट होकर वेपर बन जाएगा. ठीक है. ये तो बहुत सारे नॉन मेटल्स है जिसको हीट करने पर भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं. वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सब को भी हीट करने पर साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो वो सब एक्सेप्शन हो जाएगा सोनोरिटी का फॉर नॉन मेटल. Sir, in conduct heat and electricity, we also have an exception in metal. Sir, tungsten is a poor conductor of heat and electricity. सेमीकंडक्टर Tungsten is not the bad conductor of heat and electricity because जो बल्ब का अंदर तो पहले के दिनों में वो हेलोजन बल्ब तो चला जो आता था छोटा वाला, उसका तो Sir, it is the सर semiconductor, not the poor सेमीकंडक्टर conductor. यस Sir, it is not the poor conductor. हाँ It सेमी is कंडक्टर. semiconductor. बिकॉज टंगस्टन वायर से वो वायर बनता है टंगस्टन वायर. मेटल्स जनरली कंडक्ट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नोट डाउन हुआ. No, sir, last two lines. ओके. Sir, finish.
सबका हुआ? डन, सबका हुआ? क्या अभी Yes, भी? sir. ओके, metalloid. Metalloid having they have properties of both metals and non-metals. Okay, metals and non-metals. Those elements which have in the both properties of metals and non-metals, those are known as metalloid. That means it having all hard, it is soft, hard भी हो सकता है, soft भी हो सकता है, malleable हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, electricity के अंदर तर भी सकता है, नहीं भी तर सकता है, थोड़ा बहुत तर सकता है. So both having the properties of metals and non-metals, those elements are known as metalloids. So examples of metalloids are, first example is boron. सर Yes, सर ये सब जैसे मेटल और नॉन में जितना भी एक्सेप्शंस है उन लोग को हाँ, मेटालॉइड क्यों नहीं कहा जाता? नहीं कहा जाता बिकॉज जो एक्सेप्शन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक्सेप्शन है. ओके, जैसे ब्रोमीन मेरा लिक्विड हुआ, वो हार्ड मतलब सॉफ्ट सा एक्सेप्शन है, बट वो मेलिएबल नहीं है, वो तो उसका जनरल प्रॉपर्टी है. वो डक्टाइल नहीं है, वो नॉन मेटल जनरल प्रॉपर्टी है. वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहा है, वो जनरल प्रॉपर्टी है. तो सिर्फ एक पॉइंट के लिए उसको मेटेलॉइड पे नहीं डाल सकते. ठीक है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज तो सेम होना चाहिए. बोलोन हुआ, उसके बाद सिलिकॉन हुआ, देन आर्सेनिक होता है मेटलॉइड, जर्मेनियम होता है. ओके, ये सब हुआ मेरा मेटलॉइड. एंटीमनी भी है. those are metalloids. Now, after the division of all these three, metal, non-metal, and metalloid, there is left some elements which are chemically inert to anything. That means generally ये लोग एनी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. इसमें भी एक्सेप्शन होता है, तो एक पार्टिसिपेट करता है, बट generally they are chemically non-reactive.
They are chemically non-reactive. That's why these are known as noble gas or inert element. Non-reactive, that's why inert element, and they found in gaseous state. They found in gaseous state. That's why it is, we can say it noble gas. Okay, like examples, helium. Okay, helium, Hg, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब होता है मेरा नोबल गैस. हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब होता है noble gas because they found in gaseous state and they do not take part in any chemical reaction. नोट डाउन हो जाएगा तो बोलना. Sir, done. Okay, others. बाकी सबका हुआ. आयो. सर हम्म. सर हम लोग का स्कूल का 8 o'clock में क्लास है. अभी कितने बजे? हाँ सर, 7:50. Yes, सबका sir. क्लासेस है. सर 8 बजे. Yes, sir.
जब तक कंपाउंड नेक्स्ट डे चलाएं थे, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। 5 मिनट रेस्ट ले लो, फिर स्कूल का क्लास ज्वाइन कर लो। ओके, इसमें कोई डाउट है आज के क्लास में? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है। ओके देन, बाय। Bye, sir. Good morning and thank you, sir. मॉर्निंग, वेलकम।